I am being flanked by, on the right hand side, Mr. Tagore Taha, हमारा कल्चरल सेक्रेटरी है IFCSAP के. On my left hand side, Kadir Chachum, AGS IFCSAP का वेस्टर्न जोन. आप सभी को पता है हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हाल ही में हुआ है फ्रॉम 26 टू 28 ऑफ दिसंबर. इसके ऊपर हम कितने कामयाब रहे हैं और आउटकम क्या रहा है, इसको हम ब्रीफ करने के लिए आपके समक्ष हम आज आए हुए हैं. हम ये समझते हैं कि हमारा जो 25 साल का जो जर्नी रहा है IFCSAP, as you all know, it was established in 1999 on 20th of December, and we have completed our 25th year of our journey. The theme of the logo, which was launched on 1st of November, you were all a part of that logo campaign, launching of the logo, and our curtain raiser program, which was held on 1st of December. You were all a part of that. और वो दोनों जो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, उसके लिए भी मैं अब मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देने के लिए भी यहाँ आया हूँ. और हम इसी तरह आप लोगों का सहयोग से हमारी जो इश्यूज है, हमारी जो मुद्दा है और हमने जो ठान रखी है, the mission of IFCSAP, the vision of IFCSAP, the mission of IFCSAP and the core values of IFCSAP, उसके ऊपर में हमने 1 नवंबर से शुरुआत करते हुए 1 दिसंबर हमारा इंडिजिनस फेथ डे रहा है. और अल्टीमेटली we had our D-Day program, that is Silver Jubilee celebration of Arunachal Pradesh of IFCSAP, Foundation Day of IFCSAP, 26 दिसंबर to 28 दिसंबर में हुआ है. और ये बहुत ही संपन्न वे में हमने कार्यक्रम को हमने मनाया था. इस बीच हमारे 27 को जब इनॉग्रेशन हुआ था, हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री जोल ओराम जी हमारे बीच पधारे थे. और उस बीच अपने जो डायनामिक मुख्यमंत्री है श्री पेमा खंडू जी, अपने उस इनॉग्रेशन डे में वो हमारे बीच आए थे एज गेस्ट ऑफ ऑनर. आप सभी को पता है ड्यूरिंग हिज स्पीच उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिए थे. उन्होंने ये कहा कि जो PK थुंगन जी के टाइम पर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट की लागू जो हुआ था और जिसे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट एसेंट दिया गया था, उसको फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आज तक नहीं हो पाया है. तो अपने चीफ मिनिस्टर इसके बारे में जिक्र करी है. उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट की डायरेक्टिव से द गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम द रूल्स विच आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. और इसके चलते हम आपके माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर और उनके सहयोगी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्पेशली द डियर मिनिस्टर श्री मामा नाथुंग जी को हम यहाँ पे आपके माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ. धन्यवाद उनको सिर्फ नहीं बल्कि सारे अरुणाचल वासियों के लिए भी ये धन्यवाद है. हम एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ आवर वेटिंग पीरियड, द अरुणाचल प्रदेश of Freedom of Religious Act 1978 shall be implemented, executed sooner or later. Having said that, मैं ये भी आपको ये जताना चाहता हूँ कि this Freedom of Religious Act is not going to make us in a small cocoon. It is safeguarding every individuals who follow different types of religions. There are issues where
many religious followers have been converted to other religious followers also. That's also a fact. So it is going to protect every religious followers who are been either uh, forced or through any other means they have been uh, converted. And हाल ही में हमने देखा भी है द एग्जिस्टिंग जो रिलीजन है फॉलोअर्स है उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है. So इसी तरह it is an act which will be safeguarding every religious followers in the state of Arunachal Pradesh. So definitely indigenous followers का भी safeguard होंगे, but those who have gone following other religions also, they will also be safeguarded. So this concept को भी हम जरा clarity देना चाहते थे, इसलिए आज आपके समक्ष हम आए हुए हैं. And not only that, another issue which the Honorable Chief Minister has mentioned about the long felt need and demand of the people of Arunachal Pradesh, the nomenclature of the department, which was originally and constitutionally was questioned as the Department of Indigenous Faith and Cultural Affairs, but later on converted into Department of Indigenous Affairs. So I think our Honorable Chief Minister also agreed that the matter shall be taken up during the next cabinet meeting, and it will be reverted back to its original name. And for this also we are here to thank the Honorable Chief Minister and the government for declaring on that very day, on 27th of December, when both our Union Travel Minister, the Honorable Chief Minister, Honorable Minister Dia, and many other ministers also, and many Honorable MLAs, former ministers and MLAs were also there. उस पर आप उन्होंने डिक्लेयर करी थी. हम गवर्नमेंट को बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अपने चीफ मिनिस्टर ये सब दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द रखे थे. और इस बीच मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेंड्स for at least giving a scope, the space for generating awareness amongst the people what IFCSAP has been doing and what was coming forth during our Silver Jubilee celebrations. I think आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, इसके चलते मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. इस बीच हमारे बीच कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुए थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुए हैं. एंड मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों साथी जहाँ पे मुझे फ्लैंक कर रहे हैं वो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझसे छूट गया है आप दोनों भी देने के मैं आप दोनों को भी मैं आग्रह करता हूँ. विद दिस थैंक यू वेरी मच. जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश का जो इथिक्स होता है वो फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि सरकार ने अभी तक उस रूल्स को फ्रेम नहीं किया. अभी तक फ्रेम नहीं किया. सरकार अगर फ्रेम करेंगे, कानून बनाएंगे, तो कानून सबके लिए अच्छा होगा. अच्छा किस लिए होगा? सर ने अभी आपको बताया कि हर रिलीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सेपरेट करने के लिए सरकार कभी कानून नहीं बनाएगी. अगर बनाएगा तो डेमोक्रेटिक को फॉलो करते हुए बनाएगा. जबकि सरकार ने रूल्स फ्रेम किया ही नहीं. उससे पहले मीडिया वाला ने ये लिख दिया, खासकर अरुणाचल टाइम्स ने ये लिख दिया कि ये प्रोवोकेटिव है. उसका खुद न्यूज़ ही प्रोवोकेटिव था. और हमारा दरखास्त ये रहेगा कि जब तक उसको बोलता है काउंट द चिकन बिफोर हैच, सरकार ने हैच किया ही नहीं अभी तक, चिकन अभी तक निकला ही नहीं, तो उसी को काउंट कर रहा है. तो ऐसे इस नज़र से देखना नहीं है. जो भी कन्वर्ट हो गया वो भी इस नज़र से नहीं देखना है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो है कन्वर्टेड को, क्रिश्चियन को, मुस्लिम को सेपरेट के लिए बनाएगा, ऐसे सोचना ही नहीं है. अगर ऐसे सरकार लागू करता है तो हम प्रोटेस्ट कर सकता है. अगर आपका प्रोटेस्ट सही रहेगा तो हम भी साथ देंगे, क्योंकि हमको साथ जीना है. दुनिया एक है, देश एक है, स्टेट एक है. तो इस तरह से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि प्रोवोकेटिव न्यूज़ ना बनाए, हकीकत में बनाए, इथिक्स को फॉलो करते हुए. और इसका मैं
ऐसे जब बोलता है तो विस्तार से बोल नहीं पा रहा हूँ, और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, मैं उसको रिटर्न फॉर्म में एवरी प्रिंट न्यूज़ मीडिया को दूंगा इफ्सेट की ओर से एजीएस का हैसियत से। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। Cultural secretary रहा है कागू. We had lots of activities on cultural activities. तो उसके तौर पर आप participation कैसा रहा है? You can also comment on. तो रिगार्डिंग कल्चरल, तो हम लोगों ने बहुत सारा आई थिंक कंपटीशन रखा था। हम लोग का मेन मकसद था कि हमारा फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, जो फोक लोग हैं, उन सबको प्रमोट करना था और शोकेस करना था। तो साथ ही साथ हम लोग ने क्या बोलते हैं, मॉडर्न डांस का भी हम लोग कंपटीशन रखा था। और अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा से किया है और सब लोग अच्छा से पार्टिसिपेट किया है और ब्यूटीफुल मिनाज में। तो इसलिए सभी जितना डिस्ट्रिक्ट से जितना भी आए हुए जो पार्टिसिपेट किया था उन सबको मैंने थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। सब लोग इतना दूर दूर से आके पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा से हुआ है। Yeah, that's a very good question, no doubt. But then when you go into the details of this act, it's very crystal clearly mentioned that that the as a in general also, and it's a fact also, the religion is an individual state. There is no doubt about it, right? We are not having any difference of opinion in that. But there are also instances when this act was started way back in 1978. The Arunachal Pradesh did then 78 Arunachal, and Arunachal now 2025. I think you will not be able to see the differences because I, as an individual, I have seen the differences. During those days, how many schools that we had, number one, how many roads communications that we had, how many villages were electrified, how many colleges were there. I still remember in 1978, we had only one college, that's Jain College Pasigar. Now we have got many universities, many colleges. So definitely changes are imminent part of our life, and changes are imminent part of the development also. But having said that, when our people in the rural areas where they were deprived of education, sanitation, health and hygiene, so we have also seen many people alluring our indigenous believers, poor people, to come to a different mindset and a different religion, follow a different religion. And they accordingly, the movement it was there. Then in that case, just you tell me how to protect our people who are been coerced or who have been allured to convert to other religions. That is the thing. So I think an act during that time it was necessary because our indigenous believers and faith they need to be safeguarded. Now we see in a different perspective. But it is also a fact that many of our indigenous people, those who have converted to other religions, are again now being allured to convert to another religion. It's also a fact, and you are the media people. You are the best. You are the best people to judge and see it also. We as an individual, we won't be able to see it in detail. But you have got a different type of eyes that you can perceive what is happening in Arunachal Pradesh also. So I think there is this act will be preventing such conversions also. That I won't be able to say on behalf of the Christian community, but because if it is a misinterpretation that as you say, that's your conviction maybe. But then, as far as I'm concerned about the safeguarding the religious follower of indigenous people here in Arunachal Pradesh. Number one. Secondly, we also foresee that the many converted people of indigenous origins, they might also be converted to another one also. We also foresee that.
I don't know our Christian fraternities. They are seeing that uh, looming laws in the present context of the entire universal problem which we are all facing. Whether they are seeing into that perspective or not, that I cannot say. I won't be able to tell anything on behalf of them. But as far as my indigenous people are concerned, that's a very important questions that you are asking and asking the IFSAP also. You are seeing the IFSAP silence, but IFSAP is not silent at all because it's a festival of Nishi, and he is a Nishi, and he is an elected representative from the Dayun constituency, right? So uh, he represents the people of Dayun, but he is attacking the people of Nishis and the festival of Nishi. There is there are two three issues which are very critical about it. So the approach of the IFSAP is a sum of all the indigenous religious followers of the entire state. Therefore, IFSAP, if the IFSAP has to say now, IFSAP will be saying not only on behalf of the Nishi also, but not only as Nishi, but IFSAP will be saying as Khamti, as Mismi, as Dalot, Adi, Tagin, everybody. Therefore, we have we are in the uh, we are now talking with our community-based indigenous faith organizations, and IPSA will be moving in a very strong direction, and it will be a wholesome movement. Not only it's the component, the one of the component of IPSA is Mishi is no doubt, but IPSA will be moving not as Mishi, IPSA will be moving as an IPSA and fighting for the this maneuver that Mr. Nick Cummins has said as an elected constitutionally elected member, he should not have said that. That's an issue which we will be taking in a few days of time. Okay, thank you so much. Thank you very much.